प्रीति प्रिया योजना जयश्रम तो समस्त खाली कह दियो कि ऑडियो एंड वीडियो दैट इज क्लियरली विजिबल अछि एंड तुमको ऑडिबल अछि। रोशन प्रीतिप्रिया श्रद्धा केटू प्रवानी रोशन प्रियंका रितेश तुमको दैट इज ऑडियो ठीक से सुना होची जस्ट खाली कंफर्म करो देन हम स्टार्ट करिया। रोशन प्रियंका संजुला विश्वजीत वॉइस ऑफ कृष्णा ऋतुपर्णा प्रीति ज्योत्सना संजुला ओमकार ओके तो ठीक अच्छे समस्त को स्टार्ट करिया क्वेश्चन। तो फास्ट क्वेश्चन तुम पाई विश्वजीत हेलो हेलो विश्वजीत चला डायूरेसिस इज रिड्यूस्ड बाय बढ़िया क्वेश्चन एंड आराम से देखो मैक्सिमम क्वेश्चन मु गारंटी दउची तुमको 100% क्वेश्चन रो 80% क्वेश्चन तुम आसीबो जेति कि तुम माने पढी जो गारंटी आसीबो। नमस्ते अभिप्सा तो कौन हम दैट इज डायूरेसिस इज रिड्यूस्ड बाय दैट इज व्हिच हार्मोन इज इंपोर्टेंट टू रिड्यूस द डायूरेसिस। डायूरेसिस माने हम जदी कहया दैट इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द मिक्सचरेशन बोली भी कहि परिया। तो डायूरेसिस इज रिड्यूस्ड बाय ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन। कौन हम बढ़िया से डिस्कशन करिया एंड ए जो ऑप्शन को नेकी कौन कौन क्वेश्चन हे पर ताकू भी डिस्कशन करिया को आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको आराम से आसीबो वैसोप्रेसिन राइट दैट इज वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट कथा को वैसोप्रेसिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो क्वेश्चन मोर दैट इज एक्चुअली एडीएस टा सिंथेसाइज्ड कोट हुए एक्चुअली एडीएस टा सिंथेसाइज्ड कोट हुए एंड रिलीज कोट हुए। बहुत सारा पिला को क्वेश्चन आसीबो मो बार बार जत्ते भी लाइव क्लास करछि तो मैक्सिमम थोड़ा ये क्वेश्चन पचाछि दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एक्चुअली सिंथेसाइज्ड कोट हुए एंड रिलीज कोट हुए। तो कौन हो वॉइस ऑफ कृष्णा आंसर को गुड इवनिंग शशिरेखा दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन अदरवाइज हम जा कहू एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एक्चुअली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस स्ट्रिक्टली मन रखिबो एंड इट इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर pituitary right मिसी that is strictly मन रखिबो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन एक्चुअली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर pituitary। देन मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए जेति ऑप्शन अछि आ भितर को हार्मोन टा रिस्पांसिबल फॉर द मिल्क इजैकुलेशन पई कोटा इंपोर्टेंट व्हिच हार्मोन इज इंपोर्टेंट फॉर द मिल्क इजैकुलेशन को कोन हबो Which of the following option is important for the milk ejaculation? Shraddha Kitu Ankita synthesize hypothalamus and secrete posterior pituitary perfect. Missy prolactin. तो देखी को कि which hormone is important for the milk ejaculation? कौन आंसर ऑक्सीटोसिन लिपिका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन is important for the milk production and oxytocin is important for the milk ejaculation. Prolactin that is for the production of milk and oxytocin for the milk ejaculation. Then मते को कि luteinizing hormone generally male रो को सेल रे ऐड करिवो for the release of testosterone ऑप्शन दोची luteinizing hormone को सेल रे ऐड करिवो ऑप्शन 1 Leydig cell ऑप्शन 2 Sertoli cell ऑप्शन 3 बा ऑप्शन सी that is male germ cell को सेल ऊपर generally ऐड करिवो for the release of testosterone। luteinizing hormone कोठी ऐड करिवो मिसी Leydig cell अंकिता Leydig cell असंत Leydig cell परफेक्ट तो स्ट्रिक्टली मन रखिबो LL बा LH एक्ट ऑन द Leydig cell एंड LH टा Leydig cell ऊपर ऐड करके फॉर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सल्ला वैसोप्रेसिन को क्वेश्चन तुम या पचारि परिबो दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन बा वैसोप्रेसिन टा कोड रिलीज हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोड सिंथेसाइज हुए हाइपोथैलेमस रो एंड इनली काम कोन डायूरेसिस बा लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करिवो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रो काम कोन मेल केस रे Leydig cell ऊपर एक्ट करिवो फॉर द टेस्टोस्टेरोन। प्रोलैक्टिन रो काम कोन मिल्क प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन मिल्क इजैकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 2 डैश एक्ट ऑन द मेलानोसाइट बा मेलानिन कंटेनिंग सेल एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। कोन हबो आकांक्षा प्रियंका मिनी ओमकार प्रीतिप्रिया को डैश एक्ट ऑन द मेलानोसाइट बा मेलानिन कंटेनिंग सेल एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। कोन हबो को आंसर दियो समस्ते बढ़िया क्वेश्चन कौन भितर
dash at on the melanocyte. Okay, कौन होबो? That is answer कौन होबो? Luteinizing ना thyroid stimulating hormone ना melatonin? That is melatonin. Okay, melatonin. तो मते कोइ कि generally follicular stimulating hormone टा मेल केस रे कोठे ऐड करिवो? फॉर द स्पर्मियोजेनेसिस सर्टोली सेल रे ऐड करिवो ना जर्म सेल रे ऐड करिवो ना जनरली लेडिक सेल रे ऐड करिवो? कोठी एफएसएच ऐड करिवो इन केस ऑफ मेल फॉर द स्पर्मियोजेनेसिस? को आंसर कोन हबो? स्पर्मियोजेनेसिस पई एफएसएच टा जनरली कोठी ऐड करिवो? सर आज डबल क्लास चलची श्रद्धा किटू मिसी सर्टोली सेल, दैट इज FSH act on the Sertoli cell. Strictly मन रखियो LL लेडिक सेल ऊपर LH ऐड करियो फॉर द टेस्टोस्टेरोन रिलीज एंड FSH रे मन रखियो S फॉर Sertoli cell अछि तो FSH रे S अछि एंड S फॉर Sertoli cell. FSH act on the Sertoli cell and generally कोन फॉर द स्पर्मियोजेनेसिस. Anyone who can say what is spermiogenesis? Spermiogenesis कोन? रितेश, what is spermiogenesis? शशिरेखा, अंकिता, मिनी, स्मृति, that is what is spermiogenesis? Spermiogenesis कौन हबो? What is spermiogenesis? Formation of spermatozoa. रितेश, that is हमें ये कहि परिया that is spermatid रू spermatozoa हबा बा immature sperm. Spermatid to spermatozoa बा mature sperm. Sperm otherwise called as spermatozoa. तो generally immature स्पर्म बा स्पर्माटिड रो मैच्योर स्पर्म बा स्पर्माटोजोआ हबार प्रोसीजर को कहे स्पर्मियोजेनेसिस एंड इंपोर्टेंट होची एफएसएस. ओके, नेक्स्ट चलो मते को कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ता जनरली कोड रिलीज हुए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना हाइपोथैलेमस. फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इंपोर्टेंट टू रिलीज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? Thyroid stimulating hormone is released from anterior pituitary, posterior pituitary, na hypothalamus. कौन आंसर? Good evening Roshan. Voice of Krishna, anterior pituitary, perfect. Jai Shri Krishna, that is हमें जदि कहिया that is anterior pituitary will release thyroid stimulating hormone. Okay, thyroid stimulating hormone. चलो next question चलो. Question number 3. Pineal gland is located on? Where is the pineal gland is located? Pineal gland is located. कोडी pineal gland located अछि? Pineal gland is located on dorsal side of midbrain, dorsal side of hindbrain, dorsal side of forebrain. Now that is the vertical side of forebrain. कोन हबो? Where is the pineal gland is located? कोडी pineal gland located अछि? dorsal side of midbrain, anterior pituitary. ठीक अछि. ए क्वेश्चन को आसो क्वेश्चन नंबर 3 को. Where is the pineal gland is located? dorsal side of forebrain. मिसी Basanti B, dorsal side of hindbrain. Where is the pineal gland is located? आउ थरे को बोलसे ऑप्शन पड़ी कि pineal gland is located. Pineal gland ता located on the कौन आंसर? Pineal gland is located. आंसर का है मैक्सिमम आसी. That is dorsal side of forebrain. Okay, pineal gland is located dorsal side of forebrain. Next question चलो. Pineal gland will secrete dash hormone. Generally pineal gland ता ठीक अछि मिसी. सर एते टाइम डबल क्लास फायदा मिलुछि. अंकिता सी. ओके, तो को कि that is pineal gland secrete dash hormone. Generally pineal gland ता को हार्मोन secrete करिवो? Melanocyte stimulating hormone, melatonin, that is FSJ लिखा है. Suppose this is FSH, follicular stimulating hormone, ना insulin. Pineal gland secrete करिवो कोन? Melatonin, right? Melatonin. तो मते एटी को कि insulin generally कोड रिलीज हुए? Insulin is secreted from which gland? को कि insulin टा कोड secreted हुए? स्मृति, रितेश, ज्योति, लक्ष्मी. That is from which gland? Shraddha Kitu 4 final answer B होगा. Okay. From which gland the insulin will release?
इंसुलिन कोड रिलीज हुए को कौन हम इंसुलिन टा कोड रिलीज हुए इंसुलिन विल रिलीज फ्रॉम pancreas, right? ऋतुपर्णा गिरी pancreas हम जानी छे generally pancreas is a gland which can act as both exocrine and also endocrine, and जो endocrine part रहिला this part will release hormone, and generally एटी तीनटा सेल देखा जाए alpha cell, beta cell and delta cell. Alpha cell will release glucagon, this is a hormone. Beta cell will release insulin, this is also hormone, and somatostatin strictly मन रखियार अछि, that is alpha cell, beta cell, delta cell जोटा कि endocrine part of the pancreas अछि और hormone release करे. Then मते कोइ कि glucagon, insulin ये सब जाक हार्मोन गुडा को प्रोटीनियस हार्मोन या स्टेरॉइडल हार्मोन. Insulin, glucagon, these are the proteinaceous hormone or steroidal hormone, and insulin is released from the beta cell of the pancreas. Insulin, glucagon, that is the steroidal hormone or the proteinaceous hormone. Anyone? Priyanka, Ritesh, Missy, beta cell of pancreas, perfect. That is Lipika, proteinaceous hormone, perfect Lipika. That is insulin is a proteinaceous hormone. Then मते कुह कि insulin टा that is जेतबेले हमर ब्लड रे ग्लूकोज लेवल टा इंक्रीज हो जाए सेतबेले इंसुलिन काम करे, या जेतबेले ब्लड रे ग्लूकोज लेवल कमी जाए सेतबेले इंसुलिन काम करे. बा इंसुलिन टा जनरली ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को कमाए या ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए. Which of the what is the function of insulin in your blood? It will increase the blood glucose level or it will decrease the blood glucose level. कौन हबो? रोशन इंक्रीज. जनरली इंसुलिन रो काम या जेतबेले हमर ब्लड रे ग्लूकोज लेवल बढ़ी जाइतिबो, सपोज डायबिटीज मेलिटस पेशेंट जो मानकर ब्लड रे ग्लूकोज लेवल बहुत अधिका, एंड एते ब्लड रे ग्लूकोज लेवल अधिका कि दैट इज यूरिन वाटर दे गिरबी दैट इज ग्लूकोज रिलीज हुए. एंड डायबिटीज पेशेंट मानकर जेहेतु ब्लड रे ग्लूकोज लेवल अधिका थाए तो से मानकर इंसुलिन दरकार पड़े. हम ये कहि पारे जेतबेले ब्लड रे ग्लूकोज लेवल अधिका थाए तो इंसुलिन टा कोन करे ना ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को कमाए. ठीक अछि, दैट इज इंसुलिन will decrease the blood glucose level. Perfect. Then melanocyte stimulating hormone, एटा बढ़िया क्वेश्चन. melanocyte stimulating hormone टा कोड रिलीज हो from the pars distalis, ना from the pars intermedia, ना from the pars nervosa. कोकी from the which structure the melanocyte stimulating hormone will release? Pars distalis, ना pars intermedia, ना pars nervosa. कौन हबो? पतित पावन, सौम्य, ADH increase diabetes insipidus. Generally जदि एंटी डायरेटिक हार्मोन डेफिशिएंसी होबा डायबिटीज इंसिपिडस बा लॉस ऑफ वाटर होबा थ्रू दी यूरिन. एंड जनरली हमें 1.5 लीटर सुसु करा जगह बहुत सारा सुसु करे 10 ରୁ 12 लीटर. नमिता डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. परफेक्ट अभिप्सा. इंक्रीज ब्लड लेवल 9, दैट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ी गले डिक्रीज करिवो. पार्ट्स इंटरमीडिया, लक्ष्मी, ज्योति भूषण, ओके दैट इज पार्ट्स इंटरमीडिया. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. देखो को ऑप्शन को नहीं कि हमें डिस्कशन कले एटा तुम मन रही जो इजीली. 24 hour diurnal rhythming of our body is maintained by, already easy question. को कि that is 24 hour diurnal rhythms of our body is maintained by, easy question. लिपिका first answer, I think लिपिका रा first answer melatonin, right? and generally glucagon टा alpha cell रिलीज हुए, alpha cell of pancreas जे कि ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए एंड इंसुलिन ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को कमाए. थाइमोसिन रिलीज फ्रॉम थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस ग्लैंड रे जनरली टी लिम्फोसाइट मैच्योर हुए एंड ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अच्छा मते कहो कि जनरली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन योर बॉडी? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन इन योर बॉडी? एनीवन? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन इन योर बॉडी? को ऑक्सीटोसिन रो फंक्शन कोन हम बॉडी रे? What are the functions of oxytocin in your body? Akanksha, Ritika. What are the functions of oxytocin in your body? Question 5 रही गला अनिल. What is the function of oxytocin in your body? Okay. एटा कहि सारा तापर कहया melatonin influence. Oxytocin रो function कोन? That is cause the contraction during pregnancy. हम जानि जे that is during the parturition or during the delivery of the baby. Oxytocin from the posterior pituitary of the mother रो posterior pituitary release है कि that is uterine रो wall जो रहला myometrium तापर ऐड करे and strong वा wild contraction करे for the child birth. and also oxytocin is called as the love hormone or bonding hormone. Sabita, perfect. Stimulate uterine contraction, perfect. and also oxytocin is responsible for the milk ejaculation.
So melatonin influence metabolism, pigmentation, menstrual cycle, defense capability, all of this. Okay. Question number 7. Menstruation cycle is affected by the following hormone except. Menstrual cycle is affected by the following option except. कौन हो अंकिता को? श्रद्धाकीटू, झरना, शशिरेखा, bond hormone and the love hormone, right? Perfect. Uterus contraction, ready. Ankita A. Milk ejaculation, Jyoti, milk ejaculation and uterine contraction, perfect. Missy, Ankita, Lakshmi, contraction during pregnancy, okay. तो कौन है? संजुला A. तो menstrual cycle generally affected by thyroid द्वारा affected हबो, कारण हमें जानी चाहिए suppose hypothyroidism हो कि hyperthyroidism हो, menstrual cycle affected हुए. Melatonin रो 24 hour diurnal rhythm maintain करे, ये भी affected करिवो. Estrogen affect करे, but generally oxytocin टा affected करिवोनी, ठीक अछि. तो oxytocin है option D, oxytocin. Joyश्री, oxytocin perfect. Oxytocin. Next चलो. Thin flap connective tissue which connect the two lobes of thyroid gland. हमें जानी चाहिए where is the thyroid gland is located. Thyroid gland टा generally कोठी located अछि, and strictly हमें ये जानी चाहिए that is thyroid gland is located, that is two side of the trachea, but trachea ର दी पट side रे thyroid gland is located, and thyroid gland रो जो देखिबा suppose this is the trachea and this is the thyroid gland butterfly shape रो. The thyroid gland is connected by thin flap connective tissue that is called as isthmus, ठीक अछि. ये गोटे butterfly shape रो रहला, एपटे butterfly shape रहला, and both side जो thyroid that is रहला lobe रहला, तो connected by a thin connective tissue that is called as isthmus. Okay, the answer is isthmus. तो मते को कि इलियम इज ए पार्ट ऑफ कहार पार्ट? इलियम टा गोटे स्मॉल इंटेस्टाइन रो पार्ट ना लार्ज इंटेस्टाइन रो पार्ट? इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट इलियम ना लार्ज इंटेस्टाइन इलियम, कोन हबो? isthmus. अंकिता, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड isthmus. सविता परफेक्ट. दैट इज जदी कहया सी हबो सदाकीटू परफेक्ट. प्रियंका सी. प्रीति पवन ओके. तो इलियम इज ए पार्ट ऑफ duodenum, jejunum, ileum. These are the part of small intestine or large intestine? That is small intestine, perfect. Then jodi kohe ampulla, this is the part of infundibulum, ampulla, isthmus. These are the part of infundibulum, ampulla, isthmus. कौन हबो? infundibulum, ampulla, isthmus. ये होची fallopian tube रो part. ओके चलो, तो आंसर होची isthmus. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो. Which of the following is incorrect about the thyroid gland? Thyroid gland को नेकरी कोटा incorrect. It is composed of follicles and stromal tissue, ठीक अछि. It secretes the tetrahydrothyronin or thyroxine and triiodothyronin T4 and TCT. It consists of 4 lobes and it is stimulated by the hormone thyroid stimulating hormone. Generally हमें जानी चाहिए thyroid gland होची butterfly shape रो, and thyroid gland रो location होची that is trachea रो both side रे, and thyroid gland connected each the two lobes are connected by the thin flap connective tissue जोटा कि हमें कहले isthmus, and generally it is composed of follicles and stromatal tissue, perfect. It secrete हमें जानी चाहिए that is thyroid gland रो two hormone secreted हुए, that is one hormone is T3 and another hormone is T4. strictly मन रखिबो T3 रो full form होची triiodothyronin and T4 होची tetraiodothyronin, and you have to remember T4 जहाँ को हमें कहते tetraiodothyronin is otherwise called as thyroxine. To have remember that is tetraiodothyronin is otherwise called as thyroxine. So it consists of 4 lobes. No, it consists of 2 lobes. ताले कौन है आंसर? C. It consists of 2 lobes and it is stimulated by the thyroid stimulating hormone. Perfect. मते को कि if the thyroxine will secrete low amount, it is called as hypothyroidism or hyperthyroidism. कौन हबो? Ritika, tetraiodothyronin, it is otherwise called as thyroxine. If the thyroxine hormone will secrete in a low amount, it is called as hypothyroidism or hyperthyroidism. कौन हबो? If the thyroxine will release in low amount, it is called as hypothyroidism or hyperthyroidism. कौन आंसर? Hypothyroidism. Experience ready. अंकिता hypothyroidism. Then आमे जदि कहबा the disease goiter. Goiter is caused due to the hypothyroidism or hyperthyroidism, जोटा का हमें गलगंड बोली कहउछे. तो आयोडीन रो अभाव रो जो गलगंड हुए, this is the goiter is caused due to the hypothyroidism or hyperthyroidism. कौन आंसर? Goiter is caused due to hypothyroidism. Perfect. Then that is the Graves disease.
it is otherwise called as that is otherwise called as exothalamic goiter. Strictly मन रखिबो गलगंड बा जोटा के हमें कहूचे goiter. तो जनरली goiter disease cause हुए by the hypothyroidism. Hypo माने जदि thyroid gland रू hypothyroidism, hypo माने लो बा कम, जदि thyroid gland रू thyroxine बा T4 टा लो सिक्रेशन हबो ताहाले हमें ताको कोन कहया, दैट इज हाइपोथायराइडिज्म कहया, डिजीज ऑफ गॉइटर जाको ओडिया रे गळगंड कहया जे. जदि हाइपर हला बा दैट इज अधिका सिक्रेशन हला T4 रो बा थायरॉक्सिन रो ताहाले हमें ताको कहला हाइपरथायराइडिज्म. हाइपरथायराइडिज्म रो डिजीज होची कोन, एक्सोथैलामिक गॉइटर. एक्सोथैलामिक goiter and exothalamic goiter is otherwise called as exothalamic goiter को otherwise called as कौन, Graves disease. You have to remember Graves disease. तो एई भले मन रखो Graves रे कोन अछि, R अछि hyperthyroidism and goiter रे that is hypothyroidism हो hyper Graves disease. Hyperthyroidism Graves disease अंकिता exothalamic goiter adult ready. Then also मन रखिबो that is जदि गोटे pregnant mother रहिले बा pregnant woman रहिले and pregnant women कर जदि T4 बा थायरॉक्सिन टा लो सिक्रेशन होउची ताहाले पेट भितरे बढुतिबा एम्ब्रियो रो दैट इज स्टंटेड ग्रोथ हबो एंड मेंटल रिटार्डेशन हबो, याकू कहा जाय क्रिटिनिज्म. तो एमती भी पचारि परिबो तुमको क्रिटिनिज्म टा जनरली हाइपोथायराइडिज्म जो हुए ना हाइपरथायराइडिज्म जो हुए, तो आंसर इज दैट इज हाइपोथायराइडिज्म. नेक्स्ट, enlargement of thyroid gland is called as, enlargement of the thyroid gland is called as Sabita, perfect, Sanjula, Ritisha, Sabita, cretinism, hypothyroidism. बढ़िया अछि सबिता, ऋतुपर्णा, समस्त का आंसर परफेक्टली ठीक अछि. एंड जेतिक भी हमें मैराथन रे करिया अप्रोक्सीमेटली 50 पर क्वेश्चन करिया एंड मु तुमको दैट इज गोटे गोटे क्वेश्चन को नै कि कोन कोन क्वेश्चंस हेई परिबो एंड से रिलेटेड रे क्वेश्चन करि करि जे एंड जदी कंप्लीटली मिसिया 100 पर क्वेश्चन तमे पाई जिवो. तो स्क्रीन रे जदी तुमको 50 क्वेश्चन शो करिवो तो तमे ए एक्सपेक्टेशन धरि कि चलो, तो दैट इज 100 प्लस क्वेश्चन तमर सॉल्व होई जइथिवो. ओके, तो कोन होबो, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड एज हाइपोथायराइडिज्म ना हाइपरथायराइडिज्म ना गॉइटर, दैट इज एनलार्जमेंट रे गॉइटर. ओके, नेक्स्ट चलो. द फीचर्स ऑफ क्रिटिनिज्म इंक्लूड, क्रिटिनिज्म कोन जति गोटे प्रेग्नेंट वुमेन केस रे जदी प्रेग्नेंट वुमेन रो थायरॉक्सिन हार्मोन टा लो सिक्रेशन होची, दैट इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो बा जो एम्ब्रियो टा डेवलप करथिबो तो तार स्टंटेड ग्रोथ होबो, मेंटल रिटार्डेशन होबो, abnormal skin and deep mutation and all of this. The answer कोन होबो, it is all of this. समस्त को परफेक्ट. लक्ष्मी, तनुश्री रेडी, that is all of this. Next question चलो. Tricuspid valve is present between, where is the tricuspid valve is located? जदि हमें देखिबा tricuspid valve कोठी लोकेटेड अछि, two atria, two ventricle, कोन होबो आंसर? All of these are correct. तनुश्री D. Tricuspid valve is present, कोन होबो tricuspid valve? Tricuspid valve is present. Tricuspid valve is present in, tricuspid valve is present in between two atria, two ventricle, ना left atria and left ventricle, ना right atria, right ventricle. कौन होबो? Both side, right atria, right ventricle. Suppose this is the structure of human heart and हमें जानी छे that is right atria and right ventricle with a tricuspid valve and left atria, left ventricle with a bicuspid valve. This is the not structure of human heart. And जदि हमें actually देखिया human heart रो structure, this is the clenched fist बा गोटे आंगुठी के मुठा कले जो बळे देखा जाय सेही बळे. तो generally right atria, right ventricle, tricuspid and bicuspid valve, and bicuspid valve is otherwise called as mitral valve. You have to remember mitral valve कहिया जहा, bicuspid valve कहिया सेया. ठीक अछि. तो मते को कि the first heart sound, generally first heart sound कोटा, love or dove? What is the first heart sound, love or dove? First heart sound कोटा, love or dove? प्रथम heart sound कोटा, love or dove? कौन होबो? The first heart sound is love or dove? कौन होबो? The first heart sound is love or dove? That is first heart sound is love. And मते को कि that is first heart sound love टा केमती प्रोड्यूस हुए? During the option दोची, the first heart sound love is produced during the opening of tricuspid and bicuspid valve, during the closure of tricuspid and bicuspid valve, during the closure of semilunar valve, during the open of semilunar valve. कौन होबो? That is the first heart sound love is produced during the closure of tricuspid and the
bicuspid valve and the second heart sound is dop. तो dop टा केतବେଳେ प्रोड्यूस हुए due to the closure of semilunar valve. Okay, perfect. तो आंसर तुमको आसीबो tricuspid valve is present between the right atria and right ventricle. Okay, next question चलो. Bicuspid valve and mitral valve is present between एटा तो आसीबो तुमको चलो next question. Caudate tendini are found in. This is the most important question. Where is the caudate tendini is found? Caudate tendini normally found in joints, atria of heart, ventricle of heart, na ventricle of brain. Where is the caudate tendini is located? Caudate tendini ta generally कोठी located अछि. कोन आंसर? Jatin, Lakshmi, left side, closure of semilunar valve. को ए क्वेश्चन आंसर कोन होबो? Caudate tendini are found in. Where is the caudate tendini is located? Suppose यदि हमें हार्ट रा स्ट्रक्चर करिया 1 सेकंड रे पूरा पानी क्रिस्टल क्लियर होबो. Suppose this is the structure of human heart. Suppose already ମୁଁ कहि सारची this is the not actual structure of human heart. Clenched fist बा बुढ़ा अंगूठी बड़े but बुझिया पे हमें कले. Then suppose this is the called as atria and this is called as the ventricle. तो generally ventricle रो छोटे छोटे projection देखा जाए and the projection of the ventricle is called as columni corneae. Columni corneae. And generally columni corneae पर छोटे muscles present थांती हमें जहाँ कहि पारे papillary muscle. And generally papillary muscle रू suppose this is tricuspid valve and this is bicuspid valve. A papillary muscle रू that is ए वाला attach होता है structure called as caudate tendini. तो caudate tendini टा कोड present है ventricle of the heart. कौन आंसर? C. Thin and the cord-like tendon. C. Ventricle of the heart. तो ventricle of heart रे जो projection देखा जाए projection को हमें कहले columni corneae. Projection ऊपर जो muscle देखा ले ताको हमें कहले papillary muscles. And generally papillary muscle रू tricuspid valve and bicuspid valve को जो thin cord like structure बाहर छी ताको हमें कहले caudate tendini. And caudate tendini रो काम कोन जेतबेले generally गोटे force पड़ी कि ventricle की fill हो blood तो सेतबेले that is structurally support दबो tricuspid valve और bicuspid valve को. तो ventricle of the heart रे present है. Next question. Ventricles are the thick walled as compared to the atria. Why the ventricles walls are more thick by more thickness than the atria? कोन होबो? कोन आंसर? That is ventricle of the heart thin and cord like. Amit Surya Prasad B. That is ventricle is thick walled as compared to the atria. Generally जदि हमें heart रो wall देखिया तो atrial wall and the ventricular wall भितरे that is ventricular wall टा होची more thickness. बाजे देखिया ventricular wall होची more thickness. Why? Because it is present on the posterior part. Now it has to pump blood. Now it is really that is it has to pump blood. Again हमें जानी चाहिए generally right ventricle जो blood pump करिवो it is कुआडे कि जीवन ना towards the lungs. And generally lungs रे oxygenated हबो and right left ventricle जो blood pump करिवो जीवो कुआडे कि ना body रो different parts. So generally जेहेतु ventricle blood को pump करछि तो तार thickness टा अधिक थिबा दरकार. एडी मु तुमको गोटे क्वेश्चन पचारिबी. Suppose फोन टा अछि कि तमरो फोन अछि दे देलो चार्ज कोन. ओके suppose यदि क्वेश्चन पचारबो that is मते कोइ कि right atria को generally को blood आसे oxygenated blood or deoxygenated blood. Which blood will come to the right atria? Oxygenated blood or deoxygenated blood? कोन आंसर? It has to pump blood. Generally right atria को blood आसे oxygenated blood आसे ना deoxygenated blood आसे. कोन आंसर? Deoxygenated blood. Then मते को कि from the lower part of the body that is which vein carry the deoxygenated blood from the lower part of the body बा body रो lower part रो को vein टा deoxygenated blood आनी के right atria को पहुंचेबो. आंसर कोन होबो? That is lower part of the body रो deoxygenated blood को vein आनी के right atria रे पहुंचेबो. कोन आंसर? Inferior vena cava. Then body रो upper part रो deoxygenated blood के आनीबो superior vena cava. Generally lower part रो inferior vena cava, upper part रो superior vena cava. तो सेमती मो को कि सेमती आंसर दियो. Generally जतले right ventricle pump करिवो तो blood ता जतले lungs को जीवो कहा दे कि जीवो pulmonary artery ना pulmonary vein. Which one is responsible to carry the blood to carry the deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs? Generally right ventricle को lungs को किए blood ने कि जीवो pulmonary artery or pulmonary vein. That is समस्त का आंसर मिनती pulmonary artery. You have to remember this is the pulmonary artery which will carry the deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. तो मते को कि that is हमें जानी छे all artery carry oxygenated blood but exception कोन? All the artery carry oxygenated blood but exception
pulmonary artery. You have to remember all the artery carry oxygenated blood but exception pulmonary artery, and all the vein carry deoxygenated blood but exception pulmonary vein. Here is the pulmonary vein which will carry the oxygenated blood. Okay, तो चलो ये रहिला तमरो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Papillary muscles are located orbits of ventricular eye, heart of the ventricle of the human. Where is the papillary muscle is located? Papillary muscle ta generally quote located. Papillary muscles. Okay, तो okay, तो कौन है that is ventricle of the human heart. Already हमें structure कर ले, that is the papillary muscles which is present in the ventricle of the human heart. Next question चलो. Purkinje fibers are located. Purkinje fibers are found in brain, kidney, skin, heart. Where is the Purkinje fiber is located? MD Kasser with heart, ventricle of human heart. Appearance to ठीक अछि. Lakshmi heart, ventricle of human. Perfect. तो क्वेश्चन होची कोन ना, where is the Purkinje fiber are found in? Purkinje fiber generally कोड प्रेजेंट है, and the most easiest question जदि हमें एटा कहया कोन हबो, that is the heart, right? मते को कि which is called as the pacemaker of heart. Which is called as the pacemaker of heart. कहा को pacemaker of heart कहे? Option SA node, and the second option is AB node, and the third option is that is हमें कहया Purkinje fiber. Which one is responsible to initiate the electric impulse, or हमें कहा कहया pacemaker of heart? कौन answer? That is SA node. What is the full form of SA node? Anyone? What is the full form of SA node is first question, and the second question is where is the SA node is located? What is the full form of SA node? And the second question is where is the SA node is located? Pace setter is AB node. Perfect. Sabita SA node को हमें generally कहती pacemaker, and generally AB node को हमें कहया कौन? AB node को कहया pace setter. Pace setter होची AB node and pacemaker होची SA node. The question कौन थिला? That is where is the SA node is located? Sinoatrial node is the full form of SA node is sinoatrial node. Perfect. Tanushree, Sabita, ready. Then that is question होची कौन ना, where is the SA node is located? Right corner of right atria. Dipti Abhishekta. Perfect. That is SA node is located in the right upper corner of right atria. Suppose this is the right atria, and हमें जानी चाहिए आमर जोटा left diagram से right, because diagram is watching you. So generally this is the right atria, and right atria ro upper corner, right upper corner of right atria, right upper corner of right atria. मो कथर सुनता तो हैंडराइटिंग रे किछि पढी न होई पारे, तो right upper corner of right atria रे SA node is located, and lower left corner of right atria रे AB node is located, which is required for the absorption of vitamin B12. Generally अंक भितर vitamin B12 पय vitamin B12 रे absorption पय कोटा दरकार? Which one is required to for the absorption of vitamin B12? HCl, pepsin, intrinsic factor, na amylase? Which is required for the absorption of vitamin B12? Generally vitamin B12 रे absorption पय कोटा important? आकु नै कि तीन चारटा क्वेश्चन है पचारिया. तो where is the right upper corner of intrinsic factor? Perfect. Amylase, Sabita, not. Which one is important for the absorption of vitamin B12? Intrinsic factor. आमे जानि छै मते फर्स्ट क्वेश्चन को where is the gastric gland is located? Generally आमे जदि क्वेश्चन तुमको जने पचारियो, if someone will ask you a question where is the gastric gland is located? Option 1 that is mouth, option 2 that is stomach, and option 3 that is small intestine. Where is the gastric gland is located? First question दियो तापर नहीं कहया where is the gastric gland is located? Stomach. तो generally stomach रे जो gastric gland रहला, तो gastric gland रे 3 टाइप रो सेल देखा जाए. Stomach रे जो gastric gland रहला, तो generally gastric gland रे 3 टाइप रो सेल्स रहला, and 3 टाइप रो सेल्स कोन? गोटे होची mucous neck cell, already तमे जानिचो mucous neck cell. Mucous neck cell कोन रिलीज करिवो? Mucus. What is the function of mucus? Comment करो. What is the function of mucus? What is the function of mucus? Then another cell होची peptic or chief cell. Peptic or
चीफ सेल जे कि रिलीज करिवो पेप्सिनोजेन इंपोर्टेंट है को सेल गुडा जनरली गैस्ट्रिक ग्लैंड रे अछि देन होची दैट इज पैरेटल सेल दिस इज इंपोर्टेंट पैरेटल सेल or it is otherwise called as oxyntic cell. Parental oxyntic cell will release HCl and intrinsic factor. तो कौन है that is HCl2 protection करे जेहेतु हमें जानी से स्टोमक रो that is parietal cell जो रहिला gastric gland रो parietal cell release करिवो HCl and जो HCl टा एटा जो strong acid हमें जानी से strong acid HCl टा होचे strong acid तो आमे जदि HCl को हाथ रे पकेया तो हम हाथ फोटोकाई जेर चांसेस अछि तो जनरली जेहेतु स्टोमक रे एते सारा एसिड रिलीज होची बा HCl रिलीज होची तो स्टोमक रो वाल को भी दैट इज कोना करे चांसेस थाए टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वाल दैट इज द म्यूकस इज इंपोर्टेंट फर्स्ट सेल रो काम होया कोन ना टू प्रोटेक्ट द स्टोमक दैट इज स्टोमक रो वाल को प्रोटेक्शन रे काम की कला ना म्यूकस नेक्स्ट सेल रिलीज होता म्यूकस गोटे कोड प्रोवाइड कला सेकंड होची कोन ना पेप्टिक और चीफ सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड रे जो सेकंड सेल रहला पेप्टिक और चीफ सेल सी कोन रिलीज कला पेप्सिनोजेन रो काम कोन प्रोटीन डाइजेशन करिवो बट जो पैरेटल सेल रहला HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर दिस इज द क्वेश्चन इंट्रिंसिक फैक्टर रो काम कोन जेतो बेले तमे विटामिन B12 रो कोनसी खाइबा खाइलो सपोज चिकन खाइलो कि मटन खाइलो तो जनरली विटामिन B12 जतो आसिला तो विटामिन B12 रो इजी अब्जॉर्प्शन पई तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज इंपोर्टेंट बा हमें जदी कहिया विटामिन B12 व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B12 एनीवन What is the other name of vitamin B12? What about को? What is the other name of vitamin B12? Vitamin B12 रो other ना कौन? Vitamin B12 रो other ना कौन? कार first comment? Cyanobacteria. MD कस्पर that is हम कहीं पर thiamine नो सूर्य प्रकाश नो that is cobalamin बोली कहीं पर बा cyanobacteria बोली कहीं पर तो suppose cobalamin हमें कहले तो जनरली विटामिन B12 को जदि हमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर धरिया बा जेहेतु हमें बॉडी रो बाहर ताको हमें कंज्यूम करूचे तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर को ऑब्जर्व करिया पे हमु कोन दरकार इंट्रिंसिक फैक्टर दरकार आ इंट्रिंसिक फैक्टर को सेल रिलीज करे पैरेटल सेल बा जहा को हमें अदरवाइज कॉल्ड एज ऑक्जिंटिक सेल यू हैव टू रिमेंबर देन मते क्वेश्चन देन गोटे पचारो जदि को सेल रो डिफेक्शन हेले बा जनरली तुमको ऑप्शन दियो म्यूकोस नेक सेल and peptic or chief cell and parietal cell को सेल रो डिफेक्शन हेले दैट इज तमर प्रोटीन डाइजेशन प्रॉब्लम होबा प्रोटीन डाइजेशन इनकम्प्लीट होबा को सेल रो डिफेक्शन हेले म्यूकस नेक सेल ना पेप्टिक और चीफ सेल ना पैरेटल सेल जनरली को सेल रो डिफेक्ट हेले तमर प्रोटीन डाइजेशन होबनी प्रोटीन डाइजेशन पई कोन दरकार पेप्सिनोजेन एंड जनरली पेप्सिनोजेन बा पेप्सिन टा को सेल रिलीज करतला पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म ता होची पेप्सिन तो जनरली जो पेप्सिनोजेन बा हमें पेप्सिन जाओ कहले तो एटा जनरली को सेल रिलीज करदला पेप्टिक और चीफ सेल एंड यू हैव टू रिमेंबर जे तोर पेप्टिक और चीफ सेल और जाइमोजेन सेल ताको भी कहि परिया पेप्टिक सेल इज अदरवाइज कॉल्ड एज चीफ सेल और अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज जाइमोजेन सेल तो जनरली एही सेल जदी अफेक्टेड हो दैट इज द पेप्सिनोजेन विल नॉट रिलीज एंड द पेप्सिनोजेन जदी नॉट रिलीज हो दैट इज तोरो प्रोटीन डाइजेशन होबनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो एंड मते को कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमाइलेज और हमें जदी कहया व्हाट इज द which type of food will digest by the amylase generally को type of food digested by amylase द्वारा कौन होगा आंसर which type of food will digested by the amylase which type of food will digested by the amylase कौन होगा carbohydrate लिपिका perfect carbohydrate will digested by the enzyme amylase then मते को कि that is what is the function of lysozyme what is the function of enzyme lysozyme कौन होबो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम पायल सॉरी सर लेट जॉइनिंग इट्स ओके पायल सौम्या वॉइस ऑफ कृष्णा शशिरेखा पुष्पांजलि ज्योति मिनती श्रद्धा किटू दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम हियर फागोसाइटोसिस बा हम जदी कहबा इट विल किल द बैक्टीरिया बा जनरली इफ द बैक्टीरिया जदी हमर दैट इज हमर माउथ रे जो रहिला सलाइवा तो सलाइवा रे जूस रे भी लाइसोजाइम देखा जाए and the main important function of a lysozyme to kill the bacteria okay okay मते एडी को कि bacteria cell wall is made up of peptidoglycan na cellulose na chitin bacteria cell wall is made up of peptidoglycan na the cellulose na chitin bacteria cell wall is made up of कौन आंसर
antibacterial reagent शशिरेखा perfect protect against the infection, act as a natural antibiotic and enhance the efficiency of a perfect, that is peptidoglycan cell wall आ जो lysozyme टा रहिला ये जनरली जेतले बैक्टीरिया हम माउथ रो अटैक करिवे तो बैक्टीरिया रा सेल वॉल को डाइजेस्ट करिवो ओके ठीक अछि देन मते को कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया व्हिच डू नॉट हैव एनी सेल वॉल विहीन बैक्टीरिया किए व्हिच ऑफ द बैक्टीरिया देयर सेल वॉल इज एब्सेंट किए को बैक्टीरिया सेल वॉल इज एब्सेंट कौन आंसर फंगस इज काइटिन and algae plant cell is made up of cellulose mycoplasma perfect mycoplasma is the smallest living cell and mycoplasma रा generally cell wall is absent ready ठीक अछि तो आकु नै क्वेश्चन आ भितरे को कि which one is important for the digestion of protein which one is important for the digestion of protein here HCl na pepsin na intensifier na amylase which one is important for the digestion of protein पुष्पांजलि अंकिता carbohydrate pepsin right pepsin perfect तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्टोमक स्टोर द फूड फॉर 1 आवर फॉर 2 to 3 आवर्स ना 4 to 5 आवर्स ना 30 मिनिट्स केते टाइम जनरली स्टोमक स्टोर करियो फूड को व्हाट विल बी योर आंसर हियर द स्टोमक स्टोर फूड्स फॉर 1 आवर 2 to 3 आवर 4 to 5 आवर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कोन हो आंसर तनुश्री 4 to 5 आवर्स राइट देन मते को कि दैट इज gastric gland which is located in the stomach तो generally gastric gland टा alimentary अच्छा मतलब first question को कि alimentary canal ला कितना layer how many layers are there in alimentary canal how many layers are there in alimentary canal ला कितना layer 1 2 3 4 options are there that is alimentary canal ला कितना layer अनिल आंसर मु तुम देखुची that is जो मान का आंसर समस्त को आंसर स्क्रीन में देखुची पायल जतिन तनुश्री रवि नारायण मोनालिसा 4 to 5 years तो alimentary canal रा जनरली सेरोसा मस्कुलरिस समिकोसा म्यूकोसा तो 4 लेयर हम कहि परिया तो जनरली आ भीतर जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा तो द सेरोसा मस्कुलरिस समिकोसा म्यूकोसा तो एंड द म्यूकोसा लेयर रे गैस्ट्रिक ग्लैंड इज लोकेटेड ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा मते कहि कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्टोमक तो मु तुम गोटे क्वेश्चन दउची आ भीतर कोटा स्टोमक रा पार्ट नो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टोमक रा कोटा पार्ट नो ऑप्शन 1 कोटा स्टोमक रा पार्ट नो कार्डियक फंडिक पाइलोरिक ना डुओडेनम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टोमक जनरली आंक भीतर कोटा स्टोमक रा पार्ट नो which of the following option is not a part of stomach kon answer duodenum and duodenum is a part of small intestine perfect duodenum is not a part of stomach cardiac fundic pyloric तो मते को कि that is where is the pyloric sphincter is located and what is the function of pyloric sphincter where is the pyloric sphincter is located and what is the function of pyloric sphincter just short रे को आने बुझी जीवी where is the pyloric sphincter is located dipti perfect where is the pyloric sphincter is located and what is the main function of pyloric sphincter को आंसर कोन हबो सर मु नीट एस्पिरेंट आशीष ब्रो इट्स ओके आशीष तो ए क्वेश्चन भी तम नीट पई भी दरकार पड़ो किछि प्रॉब्लम नै तो तमे नीट पई प्रिपरेशन हो छ माने तो अल्टीमेटली जानि परथिबो कि क्वेश्चन सोडा सो कोठु आसी छी एंड क्वेश्चन रो दैट इज क्वेश्चन केमति अछि duodenum and pyloric part that is हम जदि कहिबा that is stomach रो cardiac fundic pyloric part तो pyloric part of the stomach रो small intestine भितरे there is a sphincter called as pyloric sphincter जोटा कि हमें कहि परिया डायरेक्टली कि stomach रो small intestine भितरे जो sphincter दा that is called as G cell रो gastrin secretes करे right G cell gastrin is a hormone which is released from the G cell of the gastric gland okay तो कौन हुए ना pyloric sphincter is located between the stomach and the small intestine कहि परिया बा pyloric part of the stomach रो duodenum part of the small intestine okay minati by but neat rate delete yes that is जो new NCERT है जी and new NCERT रे that is CBSE अनुसार that is digestion and absorption chapter to delete कराई जी बा neat rate पढेनी सर मु किछि पढिनी कि मु कोन करिवि तो देखो तमर जेति कि सिलेबस रहला तो ताकू आगो फास्ट टू स्टार्ट करियो ट्राई करो छोटो सीक्वेंस करके स्टार्ट करो डिलेटेड सिलेबस आसे कि ओयूटी रे ज्योति तो जनरली ओयूटी पय जदि हम कहिया
सीबीएसई बही रु सिलेबस टा कटा आइछि बट जेहेतु तमरो ओयूटी टा गोटे ओडिशा लेवल एग्जाम होउछि एंड सीबीएसई बही रु कटा आइछि माने हमें सियोरिटी कहि परनी केबे भी हेले कि सीबीएसई एनसीईआरटी बही रु कटा आइछि माने ओयूटी रे पडिबोनी बोली हैला एनसीईआरटी रु कटा आइछि बट एनसीईआरटी टा ओ एस आर एनसीईआरटी डेट छ ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन digestion of carbohydrate starts from which organ from which part of the human body the digestion is starts generally digestion टा कोड स्टार्ट हुए buccal cavity stomach small intestine 60 पिला मात्र बैकफ्लो को स्टॉप करे परफेक्ट सर काली रो कमेंट रिप्लाई देलेनी आज अनिल दे दिबे आज काली टिके बिजी रहि गेली दे पारे आज दे पायल buccal cavity that is buccal cavity बा हम जहा कहू मुख गहर तो मते को कि that is how many pairs of salivary gland is located in your mouth generally mouth रे केते पेयर रो salivary gland is located how many pair of salivary gland is located in your mouth केते पेयर रो salivary gland located how many pair of salivary glands are located in your mouth कोन हो फटाफट को salivary gland that is 3 pair okay चलो then मते को कि what is the pH of gastric juice but generally gastric juice which is released from the gastric gland of the stomach and what is the pH of gastric juice 6.8 na 7.8 na 1.8 what is the pH of gastric juice 6.8 na 7.8 na 1.8 कौन हो आंसर that is strictly मन रखो तनुश्री हमर जो buccal cavity रहला बा हमर जो salivary juice रहला you have to remember salivary juice रो pH होची 6.8 स्टोमक रे जो गैस्ट्रिक जूस रहला तार पीएच होची 1.8 तो केबे भी हेले कहबोनी दैट इज गैस्ट्रिक जूस रो पीएच होची 1.8 राजलक्ष्मी प्रधान परफेक्ट स्टोमक रो पीएच दैट इज 1.8 एमडी कोसर 1.5 टू 2 बा 1.8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6.8 होची सलाइवा निहारिका परफेक्ट वॉइस ऑफ कृष्णा 1.8 अंकिता संजुला मन रखियो दैट इज सलाइवरी जूस रो होची पीएच होची 6.8 हैला 1.8 हां चलो एई बडा इजी क्वेश्चन भूल करिवनी स्ट्रिक्टली मन रखिबो ओके चलो सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग केते याक भीतर कोटा ट्रू स्टेटमेंट पढो बोलसे 21 नंबर क्वेश्चन आराम से पढो एंड बढ़िया से क्वेश्चन आंसर दियो कोन हो आंसर सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन स्टोमक पढो मु गोटे मिनिट साइलेंट रहउची तुम पढो आई थिंक पढारे डिस्टर्ब होतियो सांग सांग पढो आराम से पढ़ी के आंसर दियो एमडी कोसर 2 तो कौन देला इन स्टोमक द बोलोस इज कन्वर्टेड टू चाइम चाइम कोन बा काइम जोटा कोछ व्हाट इज काइम द फूड मिक्सेस थरोली विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस स्टोमक तो जनरली जेतबेले सपोज दिस इज द इसोफेगस एंड दिस इज द स्टोमक तो जेतबेले खाइबाटा स्टोमक रे आसी पड़ी गला तो स्टोमक रे गैस्ट्रिक जूस जेतबेले मिसी गला फूड plus gastric juice food mixes thoroughly with the acidic gastric juice तो जेतोले gastric juice हम मिसी गला ताको हमें कहले चाइ ठीक अछि बोलस कोन जेतोले सालाइवरी जूस जेतोले खाइबाटा मिसी जाए जो हमें जस्ट ओटे ओकार लागले बांती कर दे जो बोलस बा लाळस लागिथिबो दैट इज कॉल्ड बोलस तो जनरली इन स्टोमक तो बोलस इज कन्वर्टेड टू चाइ परफेक्ट ठीक अछि ना ठीक नहीं परफेक्ट देन चीफ सेल सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ऑलरेडी हमें कहिचे that is तीनटा सेल गोटे होची म्यूकोस नेक सेल जे रिलीज करथला म्यूकोस आ गोटे सेल होची पेप्टिक सेल और चीफ सेल और इट इज अदरवाइज कॉल्ड जाइमोजेन सेल जे की रिलीज करथला पेप्सिनोजेन तो एठी क्वेश्चन देछि कोन ना इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करे चीफ सेल भूल काहेकि ना इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज फ्रॉम द पैरेटल सेल और इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज ऑक्सिंटिक सेल तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बुझा पड़तो आई थिंक एंड पेप्सिनोजेन इट इज ए इनएक्टिव एंजाइम and pepsinogen is get converted to the pepsin by the hydrochloric acid or in the presence of hydrochloric acid तो बीटा एटा ओवर ठीक अछि पेप्सिन कन्वर्टेड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड तो ऑप्शन 2 पेप्सिन कन्वर्ट करिवो प्रोटीन को अमीनो एसिड रे भूल पेप्सिन कन्वर्ट करिवो प्रोटीन को दैट इज फॉर द पेप्टोन एंड प्रोटीएज तो दीटा सेट कोडा पचारछि कि ट्रू स्टेटमेंट पचारछि ओ सॉरी ट्रू तो स्टोमक रे दैट इज एटा ट्रू होबो एंड ऑप्शन सी भी ट्रू हो ताले दीटा स्टेटमेंट ट्रू बट पेप्सिन टा जदी देखिया पेप्सिन टा जनरली प्रोटीन को भांगी कि पेप्टोन और प्रोटीएज को कन्वर्ट करियो बा डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करियो डायरेक्टली अमीनो एसिड को कन्वर्ट करि परिबो नाही तो ताले आंसर कोन होबो ना ए और सी दीटा ऑप्शन करेक्ट तो ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हबो आंसर दियो दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम द हाई कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक इज परफॉर्म्ड बाय कौन हबो आंसर अमीनो एसिड रु प्रोटीन हुए ठीक अछि सौम्य अमीनो एसिड रु प्रोटीन हुए प्रोटीएज एंड पेप्टोन एंड प्रोटीएज ओके प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक इज परफॉर्म्ड बाय तो जनरली प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम किए म्यूकोस ना पेप्सिन ना कौन बी ओनली कोटा है आंसर बी दैट इज बी ओनली स्टोमक को प्रोटेक्शन करिया तो म्यूकोस हो सर मो नेट सरी गलानी मेसेज लेट रे जाउची इट्स ओके कुमार कुमोस मेहर वॉइस ऑफ कृष्णा बी लक्ष्मी दीप्ति अंकिता ज्योति श्रद्धा कीटू फाइनली 22 हवा आंसर बढ़िया ठीक अच्छी चलो अनिल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो द ऑप्टिमल पीएच ऑफ पेप्सिन इजी क्वेश्चन यार हम जानी छे दैट इज द पेप्सिन वी रिलीज फ्रॉम द स्टोमक एंड स्टोमक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड अछि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पेप्टिक और चीफ सेल और जाइमोजेन सेल अछि से रिलीज करे पेप्सिन एंड स्टोमक रो पीएच केते स्टोमक रो पीएच इज 1.8 आंसर हबो 1.8 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is incorrect about the gastric juice? Gastric juice को नेकी कोटा होची incorrect. लक्ष्मी बढ़िया अछि अंकिता निहारिका शशिरेखा दीप्ति ओके तो चलो which of the following is incorrect about the gastric juice? Gastric juice को नेकी कोटा होची incorrect. Gastric juice of an infant contain renin. Small amount of lipase also present. Gastric juice is secreted by the gastric gland. Renin does not help. Incorrect कोटा को तो आंसर आराम से आसीबो दैट इज ऑप्शन डी हमें जानि जे रेनिन रेनिन ता मन रखिबो रेनिन ता होची डीटा टाइप रो रेनिन अछि गोटे होची आर ई डबल एन आई एन जोटा की हेल्प करे कोन ना फॉर द मिल्क डाइजेशन बा मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करे इन्फेंट्स मानकर आ गोटे होची सिंगल एन जोटा की जनरली रिलीज हुए किडनी रु ठीक अछि okay the answer D is incorrect next question chalo which of the following is released in small intestine generally कोटा small intestine रो release हुए RAS रे दरकार हुए perfect renin it is important in RAS mechanism perfect now which of the following is released in small intestine generally small intestine को कोगुडा को release हुए कौन अब answer small intestine ने कौन सो release हुए suppose this is the esophagus and this is the stomach and generally these are the small intestine ठीक है small intestine को अधिका okay suppose this is the small intestine and generally small intestine में there is a structure called as pancreas and also that is liver तो generally small intestine को pancreas रो juice आछि that is हम कहू छै pancreatic juice आछि पहुंचबो also liver रो bile juice भी आछि पहुंचबो and small intestine रो निजर भी गोटे juice थाए bile will secreted from the liver and pancreas रो आसीबो pancreatic juice तो स्मॉल इंटेस्टाइन निजर गोटे जूस था इंटेस्टिनल जूस तो ऑल ऑफ दिस ओके तो मते एठी को कि दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैनक्रियाज को हमें को ग्लैंड बोली कहया दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहया ना पैनक्रियास इज कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड ओके तापर मते को कि बाइल इज स्टोर इन तो जनरली जदि हम कहया बाइल ता कोठी स्टोर हुए बाइल विल स्टोर इन जनरली बाइल ता कोठी स्टोर हुए and bile टा generally concentrated कोट हुए bile store हुए कोठी and concentrated कोट हुए bile store in which organ and also bile concentrated in which organ कौन हो bile टा कोट store हुए and कोठी concentrated हुए hetero perfect bile is store in gallbladder and also concentrated हुए भी gallbladder रे तो generally किछि लोक मानकर कौन हुए ना that is gallbladder रे ट्यूमर हुए बा gallbladder रे किछि जदी कोन से जगह स्टोन हुए तो गॉलब्लैडर को रिमूव करिया पड़े तो जनरली तले गॉलब्लैडर को रिमूव करा जिवो एक्चुअली माइंड को आसे कि हम स्टोन को रिमूव करिया कथा गॉलब्लैडर को काई रिमूव करिया जेतु स्टोन हेछि बट जनरली जदि हम गोटे थरो स्टोन को रिमूव करिया तो आउ थरे भी स्टोर हेई पारे सो दैट हम जदि गॉलब्लैडर को डायरेक्टली रिमूव कर दोचे तो बाइल टा कंसंट्रेट हेई परबनी तो ऑब्वियसली सिग्नल पळेबो लिवर पाउ कि दैट इज बाइल टा दैट इज तो हमर गॉलब्लैडर ता नाही सो दैट लिवर जो बाइल रिलीज करिवो तो कंसंट्रेटेड बाइल ही रिलीज करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो तो मते को कि इंटेस्टिनल मते मो दुटा एंजाइम दउची एंजाइम टा जनरली आ भीतर कोड रिलीज होउची
एंजाइम टा कोड रिलीज होचे ए तीनटा ऑप्शन भितर को कि कोड रिलीज होचे सपोज सुक्रेज टा कोड रिलीज होय सुक्रेज आ को कि माल्टेज माल्टोज फ्रुक्टोज लैक्टेज तो ये सब जाक कोड रिलीज होती सुक्रेज माल्टेज एंड लैक्टेज जनरली रिलीज फ्रॉम कोड रिलीज हुए sucrase maltase and lactase these enzymes are secreted from pancreas को आंसर दियो आराम से सुक्रेज माल्टेज एंड हम जानि से सुक्रोज को भांगिया पे कोन सुक्रोज भांगिले कोन ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज तो सुक्रोज को भांगिया पे सुक्रेज एंड माल्टोज को भांगिया पे माल्टोज भांगिले ग्लूकोज एंड लैक्टोज भांगिले ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तो जनरली ये सब जिंस को भांगे किए डाइसैकेराइड को भांगे कोन आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन परफेक्ट दैट इज द इंटेस्टिनल जूस रे थाए ओके चलो नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन एनिमल किंगडम रो क्वेश्चन दैट इज वेयर इज द बाय हम जदी कहिया मेटाबॉलिज्म टा जनरली कोड देखा जाए मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन मेटाबॉलिज्म टा कोठी देखा जाए मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन कोन आंसर मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन आंसर दियो कोठी मेटाबॉलिज्म देखा जिवो एनिमल किंगडम रो क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन फटाफट आंसर दियो मेटाबॉलिज्म टा कोठी देखा जाए मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन कोन आंसर दैट इज मेटाबॉलिज्म स्ट्रिक्टली मन रखिबा एनिमल किंगडम रे मेटाबॉलिज्म कोन मेटाबॉलिज्म होची बॉडी सेगमेंटेशन तो जनरली जो बॉडी रो सेगमेंटेशन रहिला तो बॉडी सेगमेंटेशन को फाइलम रे देखा जिवो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एंड आल्सो कोडाटा तो कुहो कि आ भितरु जनरली एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कोडाटा तो मेटाबॉलिज्म रो एग्जांपल बा एनिलिडा रो सब एग्जांपल पचारची को कोन बार रे ऑक्टोपस डेविल फिश आंसर कोन हबो आर्थ्रोपोडा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कोडाटा बट एग्जांपल इटी पचारची सो दैट आस्कारिस इज राउंड वर्म तो राउंड वर्म माने आस्कियलमिथेस तो आस्कियलमिथेस तो शो करिवनी लीच होचे ओटे एनिलिडा आर्थ्रोम आ लीच एनिलिडा नो एनिलिडा पिला अपेस्टर पिक्टल पे सपिया कर लोलिगोस्क्विड माने मोलुस्का तो मोलुस्का ता तो शो करिवनी मोलुस्का नो आस्कारिस माने आस्कियलमिथेस नो ऑक्टोपस डेविल फिश भी नुह पिला अपेस पिंटाडा पॉलस्टर सेपिया कटल फिश लोलिगोस्क्विड ऑक्टोपस डेविल फिश ये भी मोलुस्का तो मोलुस्का शो करिवो नाही मेटाबॉलिज्म एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का एंड आंसर इज लीच बी दैट इज ऑक्टोपस इज मोलुस्का परफेक्ट तो स्ट्रिक्टली मन रखिबा एनिमल किंगडम रे एग्जांपल मन रखिया दरकार रे जहां भी हले तमरो जदी एनिमल किंगडम रे तुम सीधा डायरेक्ट पचार दो जदी मेटाबॉलिज्म किए शो करे तमे एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कोडाटा कर दो और जदी एग्जांपल पचार देला तो सो दैट एग्जांपल आको मन रखियो हला मु गोटे एग्जांपल दोछि कहले एटा कार एग्जांपल एस्टेरिस स्टारफिश इकाइनस सी अर्चिन कुकुमारिया सी कुकुम्बर अफ्यूरा ब्रिटल स्टार दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच फाइलम एस्टेरिस स्टारफिश इकाइनस सी अर्चिन कुकुमारिया सी कुकुम्बर अफ्यूरा ब्रिटल स्टार दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच फाइलम को फाइलम रे एग्जांपल एगुडा को एकानोडोमाटा परफेक्ट पायल बढ़िया अछि पुष्पांजलि एकानोडोमाटा देन को कि दैट इज bioluminescence property को phylum show करिवो which phylum will show the bioluminescence property which phylum will show bioluminescence property फटाफट आंसर दियो which phylum will show bioluminescence property बा light emitting property generally को phylum रो bioluminescence property बा light emitting property porifera ना coelenterata ना ctenophora that is ctenophora right then मत को कि gastrovascular cavity which phylum will show gastrovascular cavity which phylum will show gastrovascular cavity porifera coelenterata ankita coelenterata then which phylum will show the water canal system कार ankita ठीक थिला gastrovascular cavity coelenterata then water canal system कार देखा जो water canal system porifera ऋतुपर्णा गिरी पढ़िया that is porifera then मते को कि that is water vascular system कार देखा जो वाटर भास्कुलर सिस्टम बढ़िया अछि अनिल पायल बढ़िया अछि आराम से आंसर दोचो एंड मन अछि सब रेडी देन मते को कि दैट इज साइकन स्पंजिला यू स्पंजिला दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच फाइलम
Cycon, Spongilla, U Spongilla. These are the example of which phylum? Cycon, Spongilla, U Spongilla. कार example? Porifera. Okay. Next question चलो. Pila apple snail, Pinctada paulostel, Sepia cuttlefish, Loligo squid, Octopus devilfish. These are example of Pila apple snail, Pinctada paulostel, Sepia cuttlefish, Loligo squid, Octopus devilfish. These are example of which phylum? Phylum Mollusca. Perfect. U Spongilla is bath spongy. Ready. तो next question जिया. हाँ एटी गला मेटामोरिज्म. तो मुझे एटी क्वेश्चन पचारे जीवो. That is which phylum will show metagenesis. Metagenesis के show करिवो. Metagenesis माने alternation of generation. Alternation of generation किए show करिवो बा metagenesis किए show करिवो. कौन आंसर? Metagenesis किए show करिवो. Metagenesis बा alternation of generation किए show करिवो metagenesis. तो ये जो 52 पिला वाचिंग करछंती तो एथरु पूरा सिंसियर जणा पड़छंती बहुत ए सब जगह पिला सिंसियर. एमडी कौशर पूरा फास्ट रो अछंती. वॉइस ऑफ कृष्णा फास्ट रो. पायल टिके लेट रे जॉइन फिर भी फास्ट रो. शशिरेखा पूरा फास्ट रो. अंकिता फास्ट रो. निहारिका फास्ट रो. सौम्याश्री फास्ट रो अछंती. गेमिंग जैकल आई थिंक रितिका मिनती प्रियंका अंकिता फास्ट रो. ऋतुपना गिरी फास्ट रो. सबिता पूरा फास्ट रो. अनिल भी फास्ट रो. लक्ष्मी तो मैक्सिमम पिला पूरा फास्ट रो जड़ित होइक अछंती. आमे जति क्वेश्चन आसी कलने दैट इज 26 क्वेश्चन पहुंचलने. आमे 26 को जति आमे डिस्कशन कले समस्त पार्टिसिपेट करछंती पूरा फास्ट रो. पुष्पांजलि आल्सो फास्ट रो अछंती. संजुला भी फास्ट रो. सौम्या रेडी. तो चलो ज्योति भी फास्ट रो. ओके तो सब पिला फास्ट रो अछंती. जति जण 50 पिला वाची करछंती तो समस्त फास्ट रो अछंती. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो. एंड मन रख मेटाजेनेसिस होची अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करिवो सिलेंडर एटा. पायल सर मो भितर अछि वो बाहर अछि नेटवर्क इश्यू थिबो बाहर थाई कि भी तुम जॉइन करछो सो मेनी मेनी थैंक्स. नेक्स्ट चलो. नेफ्रिडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. जनरली नेफ्रिडिया इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज इंपोर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन फॉर व्हिच फाइलम. को फाइलम रे जनरली नेफ्रिडिया टा इंपोर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. कोन आंसर? नेफ्रिडिया इज इंपोर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन फॉर व्हिच फाइलम? पोरिफेरा, सिलेंटरडा, टेनोफोरा, प्लैटियमथेस, एस्क्रिमथेस कोन हो? एतरे सेमिति फाइलम पचारिनी तो मोर क्वेश्चन तुमको आगे फाइलम को. नेफ्रिडियाटा को फाइलम रो एक्सक्रीटोरी ऑर्गन? नेफ्रिडियाटा कार? एनिलिडा. ओके तो तापर मते को कि जनरली ए जो एग्जांपल देछि आ भितरु एनिलिडा एग्जांपल कोटा? नेरिस एग्जांपल ऑफ एनिलिडा. फेरेटिमा एग्जांपल. हिरुडिना एग्जांपल. तो ऑल ऑफ दिस. ओके so Nereis, Ferretima, Hirudina, these are the example of Annelida, and you have to remember the excretory organ of Annelida is that is Nephridia. Next पतिको flame cell कहार excretory organ? Flame cell is the excretory organ of which phylum? That is flame cell कहार excretory organ? फटाफट को. Flame cell is the excretory organ of which phylum? Flame cell कहार excretory organ? को phylum रे excretory organ होची flame cell. कौन आंसर? Flame cell फटाफट को. Mollusca, platyhelminthes, right? Flame cell is the excretory organ of platyhelminthes, right? बढ़िया. ओके तो तापरे को कि माल्पीजियन ट्यूबुल. Malpighian tubule is an excretory organ of which phylum? Malpighian tubule. Malpighian tubule टा कहार excretory organ बोले हम कहि परबा बा excretory system. Malpighian tubule कौन अब आंसर? Malpighian tubule arthropoda. Perfect. Arthropoda ready. चलो. Okay next. Closed circulatory system is present in को phylum रो closed circulatory system. कहार closed circulatory system कौन अब आंसर? Open circulatory system कहार? Closed circulatory system कहार? NCERT lining question. Arthropoda. Open circulatory system कहार? मोलुस्का आउ आर्थ्रोपोडा. मोलुस्का आउ आर्थ्रोपोडा रहउची क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हैला. आ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होची एनिलिडा एंड कॉडाटा. एनिलिडा तो एनिलिडा रे एग्जांपल ए दिटा. तो स्ट्रिक्टली मन रखो केमती मन रखो. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम गोटे गीत सेतळ बाहर नथला ओमागो टुरु लव बोली गोटे भाइराल नथला ओमागो टुरु लव. तो जनरली एई बडा भाबो ओमागो टुरु लव रे ओ मा
ओमागो टूरुल रे ओ मा को जदि आमे धरि के चलिया सपोज ओ फॉर होची ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एम फॉर होची मोलुस्का एंड ए फॉर होची आर्थ्रोपोडा। तो जनरली मोलुस्का और आर्थ्रोपोडा होची ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होची एनिलिडा और कडाटा हैला। एनिलिडा कडाटा होची क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एसीसी सीमेंट गोटा आसेनी एनिलिडा कडाटा होची क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओमागोतुरुलव रे मन रखियो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होची मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक अछि, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होची एनिलिडा और कडाटा। तांका भितर एनिलिडा एटा आस्कारिस तो आस्केल मिथेस रा दैट इज हम कहि पारे नाही। तो नेरिस ऑफ फेरेटिमा बोथ ए एंड बी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनिलिडा। हबो नेक्स्ट चलो एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जानिथिबो। तो नेक्स्ट कौन हम? नेक्स्ट क्वेश्चन, animals having cylindrical body having an organ system level of organization showing metabolism belongs to which phylum? Animals having cylindrical body having an organ system level of organization showing metabolism to which cylindrical body kahar? That is annelida ना आर्थ्रोपोडा ना मोलुस्का। मेटाबॉलिज्म शो करियो मान तो आगो मेटाबॉलिज्म रे तो ए दिटा ऑप्शन कटि जाउची की दैट इज मेटाबॉलिज्म रे मोलुस्का और ए दिटा कटि जाउची बट सिलिंड्रिकल बॉडी दैट इज एनिलिडा। ठीक अछि, एनिलिडा परफेक्ट। तनुश्री, सबिता, शशिरेखा, गेमिंग, प्रीति पवन, अंकिता, एनिलिडा रेडी बढ़िया। नेक्स्ट चलो, एनिलिड्स मे बी aquatic, marine and freshwater terrestrial, free living ना parasite ना all of the above? Generally annelid माने मे भी कौन ही थाई पारती? Annelids may be aquatic ना free living ना parasite ना all of the above? Sir, your mnemonics and my imagination killing me inside. Okay. मन रखिया दरकार जेमिति हेले भी हमको मन रखिया दरकार, बाकी एग्जाम रे मन पड़िया दरकार। ओके, all of the above. Okay, right, that is all of the above. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31. The neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerve and double ventral nerve cord is present in. Generally the neural system consists of paired ganglia connected by the lateral nerve to a double ventral nerve cord. कहार देखा जीवो? Fasciola, ankylostoma, neris na tenia. The neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerve to a double ventral nerve cord present in. What answer? Neris. Neris of answer, that is C. Annelida, neris. Next question चलो. Which of the following monoecious? दरकार नहीं था. चलो तापर the first true coelomates. First true coelomates को मना करो. First true coelomates को मना करो. First true coelomates. First true coelomates को मना करो. First true coelomates को मना करो. First true coelomates. First true coelomates. Okay, good. तो फास्ट ट्रू सिलोमेट्स. सिलोमेट्स माने कौन? जदि हमें देखिया व्हाट इज सिलोमेट्स. सिलो माने बॉडी कैविटी. ए होगा नेजिस एनेलिडा. ओके, तो जनरली सपोज दिस इज द बॉडी वॉल एंड दिस इज द गॉट वॉल. तो बॉडी वॉल एंड गॉट वॉल भितर जदि कैविटी थिबो दैट इज हमें कॉल्ड एज सिलोम. तो सिलोमेट्स के आगो आसिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म के जो मानकर बॉडी कैविटी जे दैट इज absent से मानको आसिलोमेट्स. ए फॉर आसिलोमेट्स, पी सी सी पी. पी फॉर होची पोरिफेरा, सी फॉर होची सिलेंटेराटा, सी फॉर होची टेनोफोरा, पी फॉर होची प्लैटिहेलमिन्थेस. जो माने देखुचो तो एठी मु कहूची तो ताको मार्क करो. आसिलोमेट्स होची के पोरिफेरा, सिलेंटेराटा, टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थेस. सीडोसिलोमेट के पी फॉर सीडो, कारण सीडो रो स्टार्टिंग लेटर पी. सीडोसिलोमेट होची
ASCII helminthes pseudo ASCII then true xylem बा जो मानकर xylomates तो xylomates होची ASCII helminthes पर रहला कोन Annelida प्रथम Annelida देखा जाय एग्जांपल ऑफ कोन नेरिस ठीक अछि चलो Wucheria is an example of which phylum Wucheria टा को phylum रे example Wucheria टा को phylum रे example ASCII helminthes pseudo Satya Nidaria body cavity A and Niharika 33A perfect Priti Pawan बढ़िया ASCII helminthes सविता ASCII helminthes चलो नेक्स्ट कौन हबो तो दैट इज Wucheria is an example of ASCII helminthes then Wucheria disease cause करे Wucheria bankrupt and Wucheria molli disease करे Phylliasis then which one of the following is not a poisonous snake generally अंक भितर को snake टा poisonous नुह which snake is not poisonous कौन आंसर गेमिंग jackal सविता E. coli which of the following is not a poisonous snake आंक भितर कोटा poisonous snake नुह cobra viper python ना crate which of the following option is not a poisonous snake कोटा नुह कौन आंसर that is python is not a poisonous snake मते को कि which phylum is show bilateral symmetry without body cavity को phylum टा show करिवो bilateral symmetry without body cavity option porifera option B porifera platyhelminthes C होची ASCII helminthes D होची Annelida शॉर्ट फॉर्म रे लिखुची porifera platyhelminthes ASCII helminthes Annelida which phylum is show bilateral symmetry without body cavity कहारो bilateral symmetry without body cavity platyhelminthes perfect answer is पेन टा तळे पइला माने तळे पड़ी कि एति ऊंचा उठिला that is platyhelminthes next question match the column 1 and column 2 match करियर अछि कोन आंसर column 1 and column 2 match करियर अछि organ level picture I think देखा होतो तुमको organ level cellular level of organization tissue level organ system level of organization कोन हबो column 1 and column 2 को मैच करियर अछि column 1 and column 2 मैच करो column 1 and column 2 मैच करियर दिछि कोन आंसर column 1 and column 2 column 1 and column 2 मैच करे देछि दैट इज कोन हबो organ level किए cellular level होची porifera तो cellular level of organization porifera भीतर एग्जांपल किए cycon spongilla u spongilla these are the example of porifera तो B triple I where is option B triple I एमती कोन दिस B triple I कोठी B triple I ओके देन जो देखिबा दैट इज टिश्यू लेवल के टिश्यू लेवल होची मन रखा पे TCC टिश्यू लेवल होची सिलेंडरेटा और टेनोफरा देन सिलेंडरेटा टेनोफरा भीतर हम जानि जे ओबेलियाटा भी गोटे सिलेंडरेटा जीवो एंड आल्सो ऑर्गन लेवल होची प्लैटिहेल्मिन्थेस होची के फासियोला लिवर फ्लो तो A डबल आई वेयर इज ऑप्शन A डबल आई तो आई थिंक C बोधे A डबल आई देन होची टिश्यू लेवल होची सिलेंडर टेनोफरा ऑर्गन सिस्टम लेवल होची फेरिटिमा तो DI वेयर इज ऑप्शन DI तो ऑप्शन C आई थिंक ऑप्शन C इज करेक्ट B रु ही जना पड़ी गला दैट इज C अंकिता C ओके चलो C तो स्ट्रिक्टली मन रखियो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होची पोरिफेरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होची सिलेंडरेटा टेनोफरा ऑर्गन लेवल होची प्लैटिहेल्मिन्थेस ऑर्गन सिस्टम लेवल होची ASCII helminthes रु तळकु जा रहले नेक्स्ट क्वेश्चन चलो which of the following statement is true about cyanobacteria
which of the following is important true about the cyanobacteria? तो cyanobacteria को नेकी कोटा true? Payal, Anil, true about cyanobacteria. It is found in freshwater only. It may be unicellular, colonial, or filamentous. They often form bloom in non-polluted freshwater body. Colonies are not surrounded by gelatinous sheath. पचासे true कौन? आमे जानी चे that is cyanobacteria generally colony आकर रही परिवे unicellular, colonial, filamentous. Colonies are surrounded by it a wool. They often form blooms in polluted water body. It is often found in freshwater only. The correct answer that is B. It may be unicellular, colonial, and filamentous. That is option B is perfect. ठीक अछि option B. Next, specialized cell of the nostoc and anavena fixed nitrogen is known as specialized cell present in nostoc and anavena. This is the name of the bacteria जे कि atmospheric nitrogen को fix करे बा generally atmosphere nitrogen बा generally हम जदि कहिबा nitrogen को converted करे ammonia रे तो atmospheric nitrogen को fixation करे जो bacteria रहले nostoc and anavena तो जो nostoc और anavena रे generally कौन हुए को सेल स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट थाए हेटेरोसिस्ट आंसर कौन हबो दैट इज हेटेरोसिस्ट परफेक्ट हेटेरोसिस्ट मते को कि हालोफाइल्स बैक्टीरिया जनरली को एरिया रे ग्रो करती तो बैक्टीरिया कहा को हम हालोफाइल्स बोली कहया फटाफट को हालोफाइल्स बैक्टीरिया कहा कहया हालोफाइल्स बैक्टीरिया salty area then halophiles bacteria टा कहाँ अंडर जीव आर्किया बैक्टीरिया ना यू बैक्टीरिया आर्किया बैक्टीरिया ना यू बैक्टीरिया halophiles is an example of archaea bacteria ना यू बैक्टीरिया कौन आंसर archaea bacteria and यू बैक्टीरिया that is example of archaea bacteria then मते को कि that is मिथानोजेन को बैक्टीरिया मानु को हमें कहया मिथानोजेन बैक्टीरिया काहा कहया मिथानोजेन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसबो मिथानोजेन परे दैट इज आरएच व्हिटेकर को किंगडम करथिले बा को किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन करथिले आरएच व्हिटेकर कार्लस लिनियस को किंगडम देन होचे अर्नस्ट हैकेल को किंगडम देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर की करथिले फटाफट को दैट इज कौन हबो ना मिथानोजेन बैक्टीरिया जोटा मार्सी एरिया रे ग्रो करे बा रुमिनेंट्स एनिमल मानकर गट रे मिले मिथेन गैस प्रोडक्शन करे एंड दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच व्हिटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन परफेक्ट देन सेकंड क्वेश्चन थला कार्लस लिनियस को किंगडम थला कार्लस लिनियस को किंगडम कार्लस लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन देन नेक्स्ट कौन थला कार्लस कर टू किंगडम आरएच व्हिटेकर फाइव किंगडम तापर आइला कोन ना दैट इज हैकेल करो थ्री किंगडम बायनोमियल नोमेनक्लेचर किए कार्लस लिनियस रेडी तापर मते को कि आरएच व्हिटेकर को बेसिस रे क्लासिफिकेशन करथले आरएच व्हिटेकर बेसिक कोन थला आरएच व्हिटेकर जनरली को बेसिस रे क्लासिफिकेशन करथले आरएच व्हिटेकर को बेसिस रे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करथले तांगर बेसिस कोन थला को बेसिस रे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करथले 36 क्वेश्चन या पर आ तमर चारटा क्वेश्चन और टोटल ऊपर हम 40 क्वेश्चन ही आज डिस्कशन करिया तो कोन हो दैट इज आरएच व्हिटेकर को बेसिस रे करथिले पांचटा बेसिस थिला मेनली कोन सौम्य पांचटा बेसिस सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन mode of nutrition cell structure body organization mode of nutrition reproduction and phylogenetic relationship तो ये पांचटा कैटेगरी थिला बा पांचटा बेसिस रे सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट आगे भीतर फॉल्स स्टेटमेंट बाछो बढ़िया अछि सेल स्ट्रक्चर थालस ऑर्गेनाइजेशन पायल स्वर्णमयी पुष्पांजलि दीप्ति बढ़िया
समस्त रेडी चलो क्वेश्चन कौन हम फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट ए भितर फॉल्स स्टेटमेंट कोटा Cyanobacteria have chlorophyll A like green plants ठीक ना भूल obviously हमें जानी चाहिए Cyanobacteria is otherwise called as blue green algae जे कि photosynthetically active in nature by nature रे photosynthesis करी परियो जो bacteria Cyanobacteria perfect bacteria which oxidize various inorganic substances such as nitrate and ammonia and use the release energy for the tea production called as chemosynthetic autotroph perfect false statement पचाची heterotrophic bacteria are less abundant in nature भूल heterotrophic bacteria are more abundant generally heterotrophic bacteria होची बहुत सारा देखा जाए तो एटा होची false statement majority of heterotrophic bacteria are decomposer 3 option chemosynthetic autotroph bacteria plays an important role recycling nutrient nitrogen phosphorus एटा ठीक होची ताले केतरा स्टेटमेंट भूल होची केतरा स्टेटमेंट भूल ऑप्शन 1 सर ट्रू ऑप्शन 1 ट्रू ऑप्शन 2 भी ट्रू आंसर कोन हबो के मेजॉरिटी ऑफ द ऑटोट्रोफ आर डिकम्पोजर कोन हबो सर स्टेटमेंट 2 हबो सर स्टेटमेंट 2 माने दैट इज ऑप्शन बी हबो कोन 37 ए गोटी ऑप्शन लागुची भूल बोली एटा की कारण जे देखिबा एटा इज मोस्ट अबंडेंट हबा कथा एंड मेजॉरिटी ऑफ द हेटेरोट्रोफ बैक्टीरिया डिकम्पोजर एटा ठीक लागुची एनसीईआरटी लाइनिंग ता तो आई थिंक ठीक लागुची तो गोटी ऑप्शन ही भूल लागुची स्टेटमेंट 2 हबो पायल ओके चलो नेक्स्ट 38 क्वेश्चन सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया जनरली जो डिजीज देछि आंको भीतर बैक्टीरियल डिजीज के बैक्टीरियल डिजीज सब के बैक्टीरियल डिजीज सब के को कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज टिटानस बैक्टीरियल डिजीज साइट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज स्लीपिंग सिकनेस नुह मलेरिया नुह मम्स स्मॉल पॉक्स ये भी नुह ताले कोन आंसर बैक्टीरियल डिजीज केतरा चारटा कटक सी टी टी सी एमती आमे जे कटक स्पेलिंग करछा ओ एमती सी यू टी टी एमती नहीं कटक जदि आमे कहया दैट इज ए मान होचंदी बैक्टीरियल डिजीज कोलेरा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज साल्मोनेला टाइफी कोलेरा टाइफाइड टिटानम क्लोस्ट्रिडियम टिटानी कोलेरा टाइफाइड टिटानस एंड साइट्रस कैंकर तो ये सब होचंदी बैक्टीरियल डिजीज कटक कुआडे जाउछु कटक कोलेरा टाइफाइड टिटानस साइट्रस कैंकर दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज ओके मम्स स्मॉलपॉक्स नुह स्लीपिंग सिकनेस हम जानि छी प्रोटोजोआन डिसऑर्डरटा ट्राइकोन्सोमा गैम्बियंस नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 40 क्वेश्चन हे गला 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कोन एडा 39 क्वेश्चन या पर क्वेश्चन ता लास्ट क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन ने डिस्कशन करिया इट इज नॉट फॉर ओयूटी व्हाई इट इज नॉट फॉर ओयूटी को भी क्वेश्चन तो सेमती कहि परनी ओयूटी पय नो बोली तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमरो ये भी तो क्वेश्चन हे परिबो ये भी तो क्वेश्चन हे परिबो ये भी तो क्वेश्चन हे परिबो सब क्वेश्चन ओयूटी पय क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन कोट भी पचारि परिबो एंड सब जाको डायरेक्ट क्वेश्चन उडा सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उडा तो चलो फॉलोइंग द फीचर्स एटा कोन हबो व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ज्योति गौड़ इट इज नॉट फॉर ओयूटी इट इज फॉर ओयूटी आल्सो सॉरी सर मु क्लास कंटिन्यू करि परनी इट्स ओके क्लास सॉरी बयबे सरला बस लास्ट क्वेश्चन अछि 39 क्वेश्चन या पर क्वेश्चन दा लास्ट बाइनरी फिजन प्रायर टू फिजन मेनली बाय द देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट जनरली करेक्ट पचारछि तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन ऑप्शन 1 इज परफेक्ट देन स्पोर्स आर फॉर्मड अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन रे बैक्टीरिया स्पोर प्रोडक्शन करिवो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन टू अनदर बा जोटो हमें कहे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएनी प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर देखा जाए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर तो एटा भी ठीक है पर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर ताला आंसर ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट 40 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तमरो फॉलोइंग द फीचर्स बिलोंग टू जनरली एटा लास्ट क्वेश्चन तमरो 40 क्वेश्चन देन आ 10टा क्वेश्चन तमन हैंड रिटन दबा आ 10टा क्वेश्चन तम होमवर्क कर करी दबो
चलो कौन हम एटा तो 50 करके सेंचुरी छाड़ दवा प्रिमिटिव डाइजेस्ट आर्किटेक्चर सर सर कौन हम आंसर 40D that is complete lack of cell wall. I'm already कहचे cell wall lack आर mycoplasma रो इठी आंसर आस्तिबो anaerobic can live without oxygen बिना ऑक्सीजन रे mycoplasma बंची परियो mycoplasma is the smallest living cell मन रखिबो many of them are pathogenic to plant and animal तो आंसर होची mycoplasma तो अनफॉर्चूनेटली जदी हमरो सालाइवा द्वारा को बा हमरो माउथ को जदी mycoplasma आसी जाउची तो mycoplasma रे किछि भी करि परिबोनी कि लाइसोजाइम बिकॉज़ लाइसोजाइम होची बैक्टीरिया सेल वॉल को डाइजेस्ट करे and mycoplasma do not have any cell wall so that joker of the kingdom is mycoplasma right perfect mycoplasma belong to the kingdom monera by mycoplasma ro cell wall is absent and mycoplasma ro cell wall जेतु नाही जदी हमर saliva को आसीबो so that saliva रे lysozyme जोटा रहला तो mycoplasma को जनरली किल करि परिबो नाही ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन तम पे रहइबो 10टा क्वेश्चन पटापट लिखि दबा एंड एटा तमे कमेंट करि जानि दबो टिके भलो पे जानि देले बेटर होबो लिखिया पे ओके ओके इठी हबो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन तम रहइबो sucking and circular mouth sucking and circular mouth first question then second question that is nitrogenous base plus pentose sugar is called as third question digestion of protein starts from digestion of a protein starts from it starts from then होची fourth question PQRST के का को डिनोट करे then second heart sound lob or dub and second heart sound केमती प्रोडक्शन हुए second heart sound की और केमती प्रोडक्शन हुए then question होची जदि हम देखिबा that is what is cardiac arrest then होची that is bolting and melting by co hormone responsible bolting and melting by co plant hormone responsible then होची देखिबा that is where is the Krebs cycle occurs generally Krebs cycle कोठी हुए next question glycolysis कोठी हुए and glycolysis रे net gain ATP केते then fourth question electron transport chain रे generally proton motive force कोठी generate हुए को complex से proton motive force generate हुए तो ये होची तमर होमवर्क क्वेश्चन रहिला तो एगुडा तुम देखिबो ऑलरेडी तो पिला आंसर देई चलणी बट तुमे दैट इज न्यूट्रिशन नाइट्रोजन स्पेटोस टाइट तो ई जहा रहला तुम होमवर्क रहला एंड कमेंट रे जणेबो आई थिंक क्लास तुम भल लागिथिबो तो नेक्स्ट क्लास रे तुम एई बडा आउ किछि क्वेश्चन एंड के डिस्कशन कर एंड क्वेश्चन लेवल को बढ़ेया एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर भी बढ़ेया आई होप तुम मानो भल लागिथिबो तो रियली कमेंट करके जणेबो दैट इज केमती थिला ऑलरेडी टाइम भी लेट हे गेलानी सो दैट नॉल अधिया क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करथांते ठीक अछि ओके एमडी कोसर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू शशिरेखा एंड बॉल से पढ़ा पढ़ी करो देन नेक्स्ट क्लास रे अधिया क्वेश्चन एंड के आसीबो एंड बॉल से डिस्कशन करबा ठीक अछि वॉइस ऑफ कृष्णा ओके सौम्यश्री पायल सर हम ओयूट रो पीओआई के क्वेश्चन रो सब सिलेक्टिव क्वेश्चन आनतु 100% नेक्स्ट क्लास रे आनिया कमेंट जेमति पिला करतले ह्यूमन फिजियोलॉजी रे सिलेक्टिव क्वेश्चन सो आनितले तो ओयूट रो पीओआई क्वेश्चन सब चैप्टर आनिया रेडी ठीक अछि सर क्लास टाइम सबिता तुमको मेंशन करा जो विद्यासागर क्लासेस रो जो YouTube चैनल रहला ताको तुम सब्सक्राइब कर रखितो तो सेतरे ही तुमको अपडेट मिली आसीबो ठीक अछि संजुला थैंक यू मिनती नेक्स्ट क्लास केबे होबो मिनती नोटिफिकेशन सेही दैट इज तमर जो YouTube रो रहिला तो तुम ताको सब्सक्राइब करतले सेठी को क्लास आछि को सार घर केमिस्ट्री आछि केबे बॉटनी आछि केबे जाना पड़ी जो बोल्टिंग एंड मेल्टिंग गिवलिन ओके ठीक अछि एंड थैंक यू चलो गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड जय जगन्नाथ जय श्री राम।